Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our session number 4 on ThrowBack 2019. I'm sure all of you are really enjoying our ThrowBack series, and I'm very thankful that many of you have sent a lot of good messages to me that you are enjoying and you are liking the entire content. Okay, we are putting a lot of efforts for making this good content for you. Here in this session number 4, I am talking about GI tags. Yes, I'm sure you are aware. सबको पता होगा GI tags क्या होता है. GI tag are geographical indication. It is primarily a name or a sign used for a certain product which corresponds to a specific geographical area, a town or a region, a state or a country. India is a member of WTO, and thereby WTO enacted a law which is called Geographical Indication Goods Related Act, and we also adopted that particular act, GI of Goods Registration and Production Act 1999, and this came into effect on 15th September 2003. According to this, the indication which identify a good as originating in the particular territory of a member or a region or a locality in that territory where a given quality, a reputation or characteristic of a good is essentially attributable to that geographic origin. That means बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ये हो गया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उसी पर्टिकुलर एरिया की है, ठीक है, और उस एरिया की वजह से इसको इस पूरे एरिया के लोगों को ये टैग मिला हुआ है. जीआई टैग का ये लोगो है. 2019 में जीआई टैग का लोगो आ गया. लोगों के साथ, है ना, ध्यान से सुनना, लोगों के साथ उसका एक तरीके से स्लोगन भी आ गया. You will have to tell me in the comment section what is the slogan. That's a homework for you. Let's start with this. Coffee variety got GI indication. There is a GI registry, which is GI registry coming under which body is also your homework. You have to tell me. I have told many times, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि GI tag किस में आता है. You will have to tell me this. Okay, ये GI tag कौन से रजिस्ट्री के अंदर में आता है. Anyway, so 5 varieties of coffee: Kurg Arabica coffee, Wayanad Robusta coffee, Chikmagalur Arabica coffee, Araku Valley Arabica coffee, and Baba Budangiri Arabica coffee. ठीक है. So this Kurg is in Karnataka, Wayanad is in Kerala, okay, while Chikmagalur is in Karnataka, Baba Budangiri Arabica coffee, that's in Karnataka, and then this is Araku Valley Arabica coffee, this is Araku Valley, is also in Karnataka. Okay, so these are the kind of various coffees got this, you can say, GI tag. Coming to next called Marayur Jaggery. This is primarily of a Marayur region, which is Idukki district of Kerala. This is known for their intensive sugarcane cultivation. वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर केन होती है और वहाँ से ये स्पेशल क्वालिटी का जैगरी गुड़ बनाया जाता है, ठीक है, और ये केरला के मारयूर डिस्ट्रिक्ट को ये मिला है, ठीक है. नेक्स्ट इज इरोड टर्मरिक. इरोड टर्मरिक इज गिवन फॉर तमिलनाडु. तमिलनाडु स्टेट में इरोड आया और ये जीआई टैग मिला है. टर्मरिक आपकी हल्दी, इरोड की हल्दी हैज अ वेरी गुड रेप्यूटेशन और इसकी वजह से इनको ये जीआई टैग मिला है. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, दिस इज अरिकन नट बोलते हैं उसको, एंड दिस इज प्राइमरी फॉर इट्स मेडिसिनल पर्पस. मेडिसिनल पर्पस की वजह से सिमिलरली सिरसी का एक और वैरायटी को जीआई टैग मिला है. दिस इज सिरसी सुपारी ऑफ कर्नाटका, ठीक है. सिमिलरली कांदमाल हल्दी, कांदमाल हल्दी इज इन ओडिशा. अभी आपने देखा होगा एक और हल्दी के बारे में बात हुई थी. दिस इज कांदमाल हल्दी, ओडिशा. इट इज फेमस फॉर दी हल्दी कल्टीवेशन, टर्मरिक कल्टीवेशन, एंड दिस इज डूइंग वंडरफुली वेल. बहुत सारी जगह पे ये कांदमाल हल्दी परचेज करी जाती है, ठीक है. कोल्हापुरी चप्पल, दिस इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स हैज ग्रांटेड दिस जीआई टैग टू कोल्हापुरी चप्पल टू 2 states, 4 districts of each, Maharashtra and Karnataka. That means total 8 districts have received this GI tag. Kolhapuri, that is Kolhapur, Sangli, Solapur, Satara of Maharashtra,
बेलगांव, धारवाड़, बागलकोट एंड बीजापुर ऑफ कर्नाटका, 2 स्टेट्स में मिला है, ये ध्यान रखना जरूरी है. एंड देन वी हैव पंचमिर्थम प्रसादम, ठीक है, विच इज कॉल्ड पंचामृत. आपने देखा होगा 5 चीजों का मिक्स करके एक प्रसाद बनाया जाता है विच इज कॉल्ड पंचामिर्थम प्रसादम, ठीक है, विच इज अभिषेक प्रसादम. भगवान को ये रिलीजियस ऑफरिंग में दिया जाता है, ठीक है. सो पंचामिर्थम इज नॉट जस्ट, यू कैन से, ये जो मंदिर है दिस इज अरुलमिगु, यू कैन से दंडायाथुपानी स्वामी टेम्पल है, सिर्फ उधर नहीं बट इट इज एंटायरली फॉर पलानी टाउन, पलानी टाउन, देयरबाय इट इज कॉल्ड पलानी पंचामिर्थम, ठीक है. ये प्रसाद है मुरुगन टेम्पल पलानी में और ये पूरे टाउन को मिला है. इट इज नॉट ओनली फॉर दैट टेम्पल, रिमेंबर दैट, ओके. दिस इज GI टैग. फर्स्ट टाइम टेम्पल प्रसादम हैज बीन बेस्टाउड विद दिस GI टैग, पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है. एंड देन वी हैव रसगुल्ला. Rasagula has originally got GI tag to West Bengal and now Odisha has also received this GI tag. Okay, it is quite old tradition and it is associated with Puri Jagannath temple and it is offered as a, you can say, prasad to Lord Jagannath. भोग की तरीके से दिया जाता है ओडिशा का रसगुल्ला. आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है. देन वी हैव तिरूर बिटेल लीफ, तिरूर, ठीक है, विच इज बेसिकली इन केरला. तिरूर बिटल लीफ को भी एक तरीके से GI टैग मिला है. इट हैज बोथ वैल्यू ऑफ स्टिम्युलेंट एंड एज वेल एज मेडिसिनल पर्पस, दोनों तरीके से मिलता है. दिस इज केरला, ओके. एंड देन वी हैव दिस त्वाल होल पुआन. दिस इज बेसिकली अ कॉम्पैक्ट वुवन फैब्रिक made in Mizoram and this is majorly for Mizo society. Mizo society ये बहुत अलग अलग तरीके से इसको पहनते हैं, ठीक है. और इनको भी ये वुवन क्लोथ को ये GI टैग मिला है. सिमिलरली मिजो पुआनचाई विच इज कलरफुल मिजो शॉल which is very important part for women in their common costume. Mizo festive dance में ये generally पहनते वो लोग. This is Mizo Puanchi. Then Dindigul Lock. Dindigul Lock, this is Dindigul city. It is known for city of lock. Okay, this is Dindigul in Tamil Nadu received this GI tag. Okay, more than 3,125 lock manufacturing units are there in 5 kilometer area in and around Dindigul in Tamil Nadu, ठीक है. सो बहुत फेमस है ये वहाँ का. एंड देन वी हैव कंदागी सारीज. कंदागी सारी विच इज इन, यू कैन से, कराईकुड़ी तालुका इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है. शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये मिला हुआ है. सो दे आर मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन फ्रॉम कोयम्बतूर. कॉटन में से बनती है ये कंदागी सारी, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर GI टैग दैट इज कनेक्टेड टू तमिलनाडु. नाउ यू विल हैव टू डू वन स्मॉल वर्क फॉर मी, ठीक है. आपको एक लिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में देना है कि कितने स्टेट्स को कौन कौन सा GI टैग मिला आउट ऑफ दिस लिस्ट. ओके, ये जो लिस्ट है उस लिस्ट में से तमिलनाडु को कितना मिला है, गुजरात को कितना मिला है, मिजोरम को कितना मिला है, ये आप एक लिस्ट बना दीजिए. सो एक छोटा सा आपका होमवर्क हो जाएगा कि हर एक स्टेट से कौन सी है. सो दिस इज योर वर्क. You have to do it for me. Put that into comment section and thereby I'll get to know about it. Okay. Thank you very much for watching this. I'm sure all of you are enjoying our throwback series. We are going to come up with lot of good quantity and good quality of content for this throwback series. और जो भी students, ठीक है, जिन्होंने साल भर की करंट अफेयर की पढ़ाई करी है या नहीं भी करी है, उन लोगों के लिए ये तगड़ा रिवीजन मॉड्यूल बन जाएगा. आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, चलिए, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ यू लाइक दिस, शेयर टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड डू नॉट मिस आउट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.